इसका क्या है, ध्यान से देखना ये एग्जैक्टली और यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को दिमाग में रिलेट करना है, फैक्ट्स को। मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप एक एक चीज को रिलेट करो, रटना ना पड़े। वॉरेन हेस्टिंग्स विल कम और आते ही ये सबसे पहले क्या करेगा, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अबॉलिश कर देगा, ही विल अबॉलिश। तो दिस कैन बी अ प्रीलिम्स क्वेश्चन दैट वॉरेन हेस्टिंग्स डिड व्हाट, राइट दिस, in 1772 dual system of governance will be abolished, dual system of governance will be abolished। ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अबॉलिश करेगा। देखो पैरेलल कितने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि हियर वी आर फोकसिंग ओनली ऑन लैंड रेवेन्यू, तो विल डिस्कस लैंड रेवेन्यू ओनली, बट आई विल गिव अ हिंट कि और पैरेलल क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट टाइम in the history of 172 years a legislation will be introduced to regulate the affairs of East India Company in India, and that is known as Regulating Act 1773। रिलेट कर पा रहे हो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से कि रेगुलेटिंग एक्ट कब है, ओके। सो दिस रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ एक बॉक्स बना के लिख लो सो दैट यू कुड रिलेट द थिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, the name of this act is Regulating Act. So what was the purpose of this legislation? The purpose of this legislation was to regulate the affairs of EIC in India. This was the very basic purpose of this Regulating Act, to regulate the affairs of EIC in India। मेरी बात समझ के, यही तो है बेसिक पर्पस। और ये पहली बार, इट मीन्स कंपनी इंडिया में कब से है 1600 और ये ईयर क्या है 1773। टोटल दिस इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 170 to 173 ईयर्स। पहली बार गवर्नमेंट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया में कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत। आज अगर आप देखोगे तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कितने सारे एक्ट हैं इंडिया में, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। देयर आर सो मेनी एक्ट्स, रेगुलेशंस द गवर्नमेंट हैज मेड टू रेगुलेट द कंपनीज इन इंडिया, ठीक है ना। और ये पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आ रहा है 1773। बट ब्रिटेन के लोग कहेंगे यार ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या बना दिया तुमने, ये सफिशिएंट नहीं है, दे विल स्टिल क्रिटिसाइज्ड। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, व्हाई द पीपल विल क्रिटिसाइज। देन द गवर्नमेंट विल ब्रिंग अनदर एक्ट दैट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट, It's India Act, and the year is 1784। और ये क्यों लेके आए, अगेन टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द पीपल, टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ पीपल, ओके, एंड टू establish better control and to establish better control over the administrative affairs of EIC। This is the purpose, to establish better control over the administrative affairs of EIC। This was the purpose कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे और भी ज़्यादा बेटर कंट्रोल स्टैब्लिश किया जा सके। दिस वाज द पर्पस, टू एस्टैब्लिश द बेटर कंट्रोल ओवर द। नाउ व्हाट यू हैव टू रिलेट, दिस इज द टाइम व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स इन इंडिया, जब वॉरेन हेस्टिंग्स एट द सेम टाइम व्हाट वी सी that regulating act was introduced, at the same time what we see, okay, Pitt's India Act was introduced, ठीक है, got it in, yes please। नहीं 1784 ना, Pitt's India Act 1773 and 1784, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि now you can relate here that here what is happening, Warren Hastings is the, तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे क्या कर रहा है, राइट दिस, इसका टास्क क्या है, द टास्क इज टू रिफॉर्म और टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये इसका टास्क है, टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ठीक है ना। So other reforms we will discuss separately. I will discuss one topic where I will discuss important governors and governor generals, ठीक है ना, उनके बारे में in detail discuss करेंगे but later। So here he has to address reforms
and here we are particularly discussing about what? Reforms in revenue system of administration. Reforms in revenue system of administration. Okay, reforms introduced by Warren Hastings. Reforms introduced by Warren Hastings and revenue system of administration. This we are going to discuss. Now our topic is reforms introduced by Warren Hastings. Reforms introduced by Warren Hastings. Okay, where? In the revenue system of administration. The time period is 1772 to 1785. So what he did? So his particular concern is which province? बंगाल, बिहार, उड़ीसा. बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा. यहीं का तो दीवानी राइट्स मिला था ना. सो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. That is the main concern. Now what Warren Hastings will do? ये क्या कहते हैं? The British company, East India Company claimed that we were the innovators. हम क्या थे? Innovators थे. But what is the reality? They were the inheritors. वो हमारी ही पुरानी मॉडल्स को क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे. They were not innovators. They were the inheritors. Now UPSC asks questions like this. That what do you think? EIC was innovator or inheritor? बस सर पकड़ के बैठ जाएगा बच्चा. क्या क्यों सर पकड़ के बैठ जाएगा? क्योंकि आप तो रट्टा मार रहे हो. ठीक है, आप सोच ही नहीं पाओगे कि why the question has been asked, right? So now here I am writing this word. बहुत important word है. You can write this. One word is what? Inheritor. Inheritor. ठीक है. And the second word is innovator. Inheritor and the second word is innovator. ठीक है. Now EIC is what? Innovator or inheritor. This we need to understand. और यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. In entire land revenue policies, you will find that in EIC is inheritor. It's not innovator. और एक होता है inherit करना. जैसे आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, ठीक है, बहुत सारा एसेट दिया, प्रॉपर्टी दी आपको, और आपने क्या किया? ठीक है, वो आता है ना ऐप पे बहुत सारे गेम चल रहे हैं, सब खेल के सब उड़ा दिया. ठीक है, तो आप इनहेरिटर थे, लेकिन इनहेरिटर हो के आपने क्या किया? सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया. क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी विल डू द सेम. इनहेरिट करेंगे, बट वो भी ठीक ढंग से इनहेरिट नहीं करेंगे. दिस आई मीन टू से. तो देखो, इन बंगाल there was a very popular Nawab, very efficient Nawab, and the name of this Nawab was Murshid Quli Khan. In first chapter we have already discussed. Yeah, discuss. And Murshid Quli Khan has introduced a system that was known as system of revenue farming. क्या ये डिस्कस किया हमने? Yes, we have already discussed. Okay. And in this revenue system farming, which I have already discussed with you, okay, the land revenue settlement was done with revenue farmers. We have already discussed it. That here, the land revenue settlement was done with whom? So it was done with revenue farmers. Okay. Now, who were the revenue farmers? Okay. This can be the old traditional zamindars also. This can be businessmen also. They can do what? Okay, auctioning will be done, and they can get lands on lease. They will collect land revenue from that particular area, and they will give what? One time payment to the Murshid Quli Khan. Yehi system tha na? This was the system. Simply, it means that this revenue system, farming system, was what? Auction based system. Here auctioning was done. Auction based system. And by this auction based system, Murshid Quli Khan was able to get one time payment. इसको one time payment मिल जाता था, right? One time payment. And the land was given on the lease. The land was given on the lease for the purpose of collection of land revenues. The land was given on lease for the purpose of collection of land revenues. ठीक है ना? The land was given on lease. And to whom it was given? So it was given to the highest bidder. It was given to the highest bidder, who will offer the highest bidding amount. ठीक है? The land will be given to that particular person. Okay?
the one who will give highest bidding amount, the land will be given. अगर हाईएस्ट बिडिंग अमाउंट दिया जाएगा तो लैंड विल बी गिवन टू द हाईएस्ट बिडर, ओके, जो ऑक्शनिंग करेगा. गॉट इट? दिस इज द, सर करता हूं मैं आपको, ठीक है. दिस इज द पॉइंट, द लैंड विल बी गिवन टू द हाईएस्ट बिडर. समझ गए? नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स इज इनहेरिटर. क्या क्या इसने चुरा लिया इसी मॉडल को, ठीक है. और क्या करता है यहाँ, राइट दिस, वॉरेन हेस्टिंग्स डिड व्हाट, राइट दिस, कॉपीड द सेम मॉडल. एग्जैक्टली, कॉपीड द सेम मॉडल, कॉपीड द सेम मॉडल. इसी मॉडल को कॉपी कर लिया एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज इजारेदारी. ठीक है, इजारेदारी. इजारा वर्ड इज अ उर्दू वर्ड. इजारा, इजारा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट. इजारा मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट. इजारा वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इजारा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट. इजारा को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. देखिए आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चे थोड़े सिंसियर हो ना, अगर उनके पास टाइम हो तो बोलो लाइव आके पढ़ें, ठीक है ना. बिकॉज इसके बाद शायद मतलब सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग जाएंगी, क्योंकि मुझे, मेरा लंबा प्रोजेक्ट है, 6 महीने साल भर लग जाएंगे मुझे रिकॉर्ड करने में, ठीक है. तो मॉडर्न हिस्ट्री लाइव में शायद मैं आखिरी बार ही पढ़ा रहा हूँ. दिस इज द लास्ट टाइम. तो इफ़ यू विल ज्वाइन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज मॉडर्न, एंशियंट, बहुत सारी चीज़ें, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू रिकॉर्ड, ठीक है. तो यू कैन, व्हेन यू विल ज्वाइन इंटरेक्टिव सेशन ना, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, डाउट पूछ सकते हो. गॉट इट? ओके. नाउ this is what Izara based system, contract based system. Now what is Warren Hastings will do? Warren Hastings will give the land, okay, on the lease. Warren Hastings will give the land on the lease, and whom he will give this land on the lease? किसको देगा? Okay, to the highest bidder. किसको दे देगा ये? He will give the land on the lease to the highest bidder. highest bidder, highest bidder को land lease पे दे देगा. It means he is doing what? He is auctioning. He is auctioning the land. अच्छा, इससे फायदा किसको हो रहा है? Who is getting benefits by this system? कंपनी. कंपनी इज गेटिंग वन टाइम पेमेंट. एक बार में पैसा कंपनी को मिल जा रहा है. So by this the company is getting one time payment here. The company is getting one time payment, okay. So this is beneficial for the East India Company. Company is getting one time payment. और देखो कितना स्मार्ट है. अच्छा देखो, if you will, okay, do auctioning every year, so what will happen? Administrative expenses will be involved. तो कितना अच्छा हो कि एक ही बार 5 साल के लिए ऑक्शनिंग कर लिया, 5 साल के लिए लीज पे दे दिया, राइट. सो व्हाट वॉरेन हेस्टिंग्स विल डू? He will introduce this system as a 5-year settlement, right. This system was introduced as a 5-year settlement. This system was introduced as a 5-year settlement, okay. So this is known as Panchshala. Panch means 5, ठीक है, and Shala means not brother-in-law, ठीक है, year, right. Panchshala, right. This is Panchshala, 5-year settlement, right. Panchshala. Now you will tell me, Warren Hastings was what? Inheritor or innovator? Inheritor, ठीक है. अच्छा देखो इसके बाद क्या करता है. He has auctioned the land for 5 year, 5 साल के लिए ऑक्शन कर दिया. After 2 or 3 years he realized कि कुछ तो लैंड्स को लीज पे हमने दे दिया, इनकम ज्यादा हो रहा है और हमने कम पैसे में लीज पे दे दिया. This might be possibility or not. You are giving land on lease for a period of 5 years, and after 1 or 2 years you realized that I have given this land on lease for 5 years to Vipin, okay, by taking 1 lakh rupees, and now he is earning 1 lakh rupees annually. अब क्या कर सकते हैं? अब तो लैंड को लीज पे दे दिया, यानी प्रॉफिट हमसे ज्यादा किसको हो रहा है? जो लीज पे लिया उसको हो रहा है. तो इन 1777 ये 5 साल का सेटलमेंट खत्म होगा. फ्रॉम 1772 टू 1777, हाउ मेनी इयर्स? 5 years. तो 5 years will be over. Now Warren Hastings will change the rule. लालची आदमी अपने रूल को बार बार बदलता है. He will change the rule. What will he say?
अगर नाउ इट विल बी एनुअल सेटलमेंट, अब हर साल के लिए 1 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा और फिर 1 साल के बाद नया अमाउंट डिसाइड किया जाएगा. विल बी एबल टू डिसाइड न्यू अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर. दिस शोज व्हाट? ग्रीड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. मेरी बात समझ गया ना? दिस इज ग्रीड. सो राइट दिस. इनिशियली इट वाज अ 5 year सेटलमेंट. It means from 1772 to 1777. This was a 5 year settlement. And for this reason, this is also known as Panchala. For this reason, this is also known as Panchala. But what will happen here in 1777? When Warren Hastings will realize, when Warren Hastings will realize that the EIC suffered loss, EIC suffered loss, okay, in this model, how it suffered loss मैंने बता दिया, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें याद भी रखो. EIC suffered loss in this model. Then what will he do? He will bring some correction. He will bring some correction. And what is this correction? The correction is it was made 1 year settlement or yearly settlement. It was made an yearly settlement. ये yearly settlement हो गया, यानी कि now this will be like this. Yearly settlement 78, 79, 79, 80. ठीक है, दिस इज ईयरली सेटलमेंट. यहाँ पे क्या था? इट वॉज 5 year सेटलमेंट. दैट्स वाई इट्स पंचशाला. पंचशाला इज अ पार्ट ऑफ दिस इजारेदारी सिस्टम. ये उससे अलग नहीं है. गॉट इट? दिस इज वॉट वॉरेन हेस्टिंग्स डिड in the name of bringing reforms in system of. Yes, please ask, Vipin. हो सकता है कुछ बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो गया हो. रेगुलरली आई एम स्पीकिंग, तो करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वाइल स्पीकिंग चीज़ें कई बार आ जाती है. ठीक है, प्लीज़ करेक्ट इट. ठीक है, ये सिस्टम ऐसा है. ठीक है ना, वो बोलते समय हो गया होगा शायद. सॉरी फॉर दैट मिस्टेक. ठीक है, कई बार दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और बोल कुछ और देते हैं. ठीक है ना? ओके, राइट, गॉट इट. करेक्ट कर लिया आपने. नाउ दिस इज पंचशाला. यहाँ कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आप ये बताओ कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी on the peasants. Now you will just suggest me some points. What will be the impact on the peasants and what is its impact on EIC? What is its impact on peasants and what is it is significant for whom? Significance में the first point we should indicate is what? For whom? Izaredari system is significant for whom? It is significant for EIC only. Because by this policy, EIC was successful in getting what? In collecting what? One time payment. एक बार में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पेमेंट मिल गया, रेवेन्यू मिल गया. गॉट इट? दे गॉट वन टाइम रेवेन्यू. दैट इज द आइडिया हियर. They got one time revenue, one time payment. In this way, their profits or gains were maximized. इनके profits maximize हो गए, gains maximize हो गए. And what will be the impact on the peasants? Peasants पे क्या impact होगा? देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा change है. What is the change here? That when there is East India Company rule in India and Warren Hastings is doing auctions, so company is a trading company. कंपनी जब भी कोई पॉलिसी लेके आती है, जैसे आप में से कई लोग शेयर मार्केट में पैसा वैसा लगाते हो, नजर रखते हो ना इस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, वैसे ही कंपनी अगर कोई पॉलिसी लेके आएगी तो जितने भी बिजनेसमैन लोग होंगे क्या करेंगे? वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो यहाँ पे हु इज द बिडर? The traditional zamindars are the bidders or the new businessmen? New businessmen, because new businessman can offer maximum bidding amount. ट्रेडिशनल जमींदार कहेगा यार इतना तो रेवेन्यू ही नहीं आता है, इतनी बोली मैं क्यों लगाऊं? आई विल नॉट ऑफर दैट हाईएस्ट अमाउंट. एंड व्हाट businessman will say? He will say that we can take risk, we can offer the maximum amount. And once the businessman will offer the highest amount or the highest bidding, they will collect what? More and more land revenues from the peasants. They will use what? Force.
They will use coercive means to collect land revenue from the peasants. And now peasants were not able to pay that much high revenue. So peasants will start evicting their homes, the peasants will start evicting their land. Peasant क्या करने लगेंगे? अपने लैंड को, अपने घर को खाली करने लगेंगे, भागने लगेंगे. They will start fleeing. Clear? And what will happen? The agriculture now will become more profitable or less profitable? Less profitable. जब एग्रीकल्चरिस्ट का मोटिवेशन ही कम हो जाएगा, जब उनको प्रॉफिट का प्रॉपर शेयर नहीं मिलेगा, व्हेन दे विल नॉट गेट द प्रॉपर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, व्हाट विल हैपन? ठीक है, गॉट दिस आइडिया, एंटायर आइडिया. सो दिस इज हैपनिंग, यही हो रहा है इन बंगाल. ओके, दिस इज व्हाट वॉरेन हेस्टिंग्स introduced this system. This is the system of Warren Hastings. Is it clear? Izaredari, Warren Hastings land revenue system. Okay, now I will enter into the other part, but before this let's revise it with the help of a slide. एक slide से revise करते हैं, so it will be better. Okay, if you will do revision with the help of slide, because we don't need to read the books here, तो थोड़ा सा revision ज़रूरी हो जाता है उस केस में, right? We need some revision. Now लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अंडर द ब्रिटिश रूल, यही टॉपिक हम पढ़ रहे थे. वी आर डूइंग सम रिविजन्स कि हमारा सेल्फ स्टडी वाला काम थोड़ा कम हो जाए. तो इजारेदारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स. हैव यू अंडरस्टूड? पंचशाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स. नाउ देयर आर अदर 3 सेटलमेंट्स दैट आई विल डिस्कस. ठीक है, हियर permanent system of settlement or zamindari settlement was done with a particular class, that is landlord. So this is what landlord based system. क्या एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं होता था? लैंडलॉर्ड्स इंडिया में नहीं थे. तो दिस सिस्टम इज व्हाट, इनहेरिट किया या इनोवेट किया? इनहेरिट किया, राइट? इन द सेम वे रैयतवाड़ी, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज डन विद द इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स, किसानों के साथ किया गया. क्या एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं होता था? मिडिवल में ऐसा नहीं होता था? होता था, शेरशाह के टाइम में होता था. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट कंपनी हैज inherited. They are not innovators. Got it? Here mahal, mahal means hota hai villages or group of villages. This is the meaning of mahal. So this was a village based system. It means here who will collect and submit land revenue to the East India Company? So villages will collect and submit. Here who will pay land revenue directly to the company officials? Individual cultivators. Here zamindar. So later we'll discuss this topic also in detail. Now here let's discuss some important statement here that can be prelims question. Land revenue before this British rule, okay, that is what Mughal rule. British rule के पहले क्या है? Mughal rule. Got it? Mughal rule. So in 16th 17th century, basically when Akbar came to power, Akbar introduced a system that is known as Mansabdari system. It was the system of administration. At the time of Akbar, administration का ही system था. Now during the, तो अब यहाँ पे देखो, during the declining phase of Mughal rule, officials and others grabbed power where they could and become de facto hereditary. इसके पहले एक और पॉइंट समझते हैं, that is very important. okay, है कि नहीं इसमें? okay, नहीं है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ आपको. देखो, in mansabdari system when Akbar was ruling, okay, so he developed a vast bureaucratic, Akbar developed what? Vast bureaucratic structure develop किया. It means there were state officials to look after or handle the administrative task. There were state officials to collect land revenue also. तो बताओ ये क्लासिकल मॉडल है कि नहीं? यस, आज भी ऐसा होता है. देयर आर स्टेट ऑफिशियल्स, so there were state officials to handle administrative tasks here. There were state officials to handle administrative task, or we can say that to collect land revenue. State officials हैं जो administrative tasks को handle कर रहा है, and they are collecting land revenue. Who is collecting land revenue? State official. Who is handling? Now here what will happen? तो देखो, the land revenue collection rights were,
नाउ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू, सोच के बताना जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है। द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स दैट वर गिवन टू द मनसबदार्स वेयर, आई एम राइटिंग वन वर्ड, हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट क्या होगा, हेरिडिटरी होगा और नॉन हेरिडिटरी। एट द टाइम ऑफ अकबर, देखो हमेशा याद रखो, जब भी पावरफुल रूलर होगा और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत शानदार होगा, स्टेट ऑफिशियल्स का एक प्रॉपर नेटवर्क होगा, तो वहां पे राइट्स आपके हेरिडिटरी नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, नॉन हेरिडिटरी। जैसे आप आईएएस बन जाओगे तो क्या आपका बेटा भी आईएएस बन जाएगा, बेटी भी आईएएस बन जाएगी, नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस बात को। तो द लैंड रेवेन्यू राइट्स वेर नॉन हेरिडिटरी। अच्छा, नॉन हेरिडिटरी के साथ साथ जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स होगा, ये ट्रांसफरेबल होगा कि नॉन ट्रांसफरेबल होगा, बताओ। ट्रांसफरेबल, देखो इट इज ट्रांसफरेबल। देखो क्या है, नॉन हेरिडिटरी है तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ट्रांसफरेबल। इट मींस स्टेट ऑफिशियल्स कैन बी चेंज्ड, मनसबदार्स को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। हालांकि इस मॉडल में बहुत बार चेंजेस हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट दिस इज व्हाट द कॉमन पॉइंट दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, ठीक है ना। बिकॉज इन मेडिवल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, तो राइट दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर, यही था बेसिक स्ट्रक्चर इन मुगल रूल, कि लैंड रेवेन्यू राइट्स वेयर नॉन हेरिडिटरी। हालांकि देखो मैंने कहा बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बट हियर दिस इज द मेन आइडिया जो हम रिलेट करने जा रहे हैं, एंड इट वाज ट्रांसफरेबल। ये बात समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन द मुगल पावर विल डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब, देयर इज द फेज ऑफ लेटर मुगल्स, वीक मुगल रूलर्स, व्हाट विल हैपन इन दैट स्टेज, क्या होगा, स्टेट ऑफिशियल्स विल ग्रैब फर्दर मोर पावर और लेस पावर, मोर पावर। If the state will start declaring itself independent, the state officials will grab more power. So what they will do, they will make their rights hereditary by themselves। ठीक है, खुद ही कब्जा जमा लेंगे। जैसे मराठास का केस बताया था आपको, याद आ रहा है कुछ, कि मुगल एम्परर ने क्या किया था, 1719 फरमान, Deccan and Sardeshmukhi, they were authorized to collect from the Deccan provinces which were the part of Mughal Empire, but Marathas ने क्या किया, they declared themselves as the hereditary chiefs of that particular area and introduced Vatan and Saranjam system। मराठा लेके आए थे ना, ये भी बात आप याद रखना, this I have already discussed, and the same has been written here that during the declining phase of Mughal rule, officials and others grabbed power where they could and become de facto hereditary landlords and petty chiefs in the local areas। धीरे धीरे वो अपने लोकल एरियाज में खुद ही चीफ बन गए, दे बिकेम डिफैक्टो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स एंड पेटी चीफ्स इन देयर लोकल एरियाज, दिस वाज हैपनिंग। ठीक है, अपने लोकल एरिया में वो हेरिडिटरी चीफ्स बन गए, दिस ऑल वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस। नाउ Warren Hastings and his land revenue system, 1772, Warren Hastings was appointed as governor of Bengal, okay, and he was given the task of reforming land revenue system of administration। Other tasks were also there, दूसरे task भी थे, but Hastings faced three major problems in introducing the land system। यानी हेस्टिंग्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए, देयर वर थ्री मेजर प्रॉब्लम। इसका मतलब द EIC was facing some problem कि कैसे कौन सा मॉडल, which model should we introduce and implement। Now the first was there was no survey of the extent of the damage caused by the Battle of Plassey and the subsequent mismanagement of the revenue regime and the Great Famine, so Hastings did not know what basis he would determine the revenue। Before 1772 in Bengal, what has happened? एक फेमाइन भी आ चुका था, and that was the Great Famine of Bengal in which 20 to 30% people were died। And after this Battle of Plassey, Battle of Buxar, what has happened? A lot of mismanagement. The entire system was mismanaged in these 7 years. Okay, disorderly administration and economic prosperity in Bengal was declining. So it will become very difficult for you as an administrator कि how much land revenue I should collect from the people। ठीक है,
कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, पीपल आर ऑलरेडी ओवरबर्डेंड, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन डिसरप्टेड ड्यू टू द करप्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली चैलेंज वेस्टिंग्स को यही हुई कि हाउ टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, बिकॉज देयर वाज नो एनी प्रॉपर डाटा, ठीक है, कि कितना लॉस हुआ, कितना डैमेज हुआ, इट वाज येट टू बी स्टडीड, अभी ये स्टडी होना था। सो दिस इज द वन चैलेंज। एंड द सेकंड चैलेंज that the company or the Warren Hastings faced was the problem of lack of ignorance in language, communication problem that I recently discussed with you, that you will communicate in English and the local farmers will communicate in their vernacular languages. So that will be the another problem. Okay, EIC officials were also not familiar with the local customs and traditions, clear, of these native people, and they did not have adequate manpower also, because this is the beginning of administrative role of East India Company in India. अभी तो रिक्रूटमेंट्स करने थे ना उनको, क्या उनके पास सफिशिएंट मैन पावर था, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे? नो, दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट मैन पावर और एडमिनिस्ट्रेटर. सो द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग द कंपनीज रेवेन्यू वाज नॉट सर्टेन. How to collect the land revenue, it was not certain, it was very difficult. And what is the third point? The third point is administrative cost. Okay, the administrative cost will be higher if the company hires people to collect revenue. ध्यान से समझना, administrative cost will be higher if themselves they will start hiring the people to handle all these administrative works and the task, collecting land revenue and everything. So it will be very difficult for them. ठीक है, ये मुश्किल हो सकता है. ठीक है, now in this situation, okay, so domestic agency is better. And what could be the domestic agency? Domestic agency क्या हो सकती थी? Okay, you can adopt the same model which was one of the best model of that time, which was previously used by Murshid Quli Khan, where he was auctioning the land. Some selective people, they will collect the land revenue, they will get land on lease, and in this way you can easily collect the land revenue, and you can get the land revenue one time, एक ही बार में. ठीक है, आपको लैंड रेवेन्यू मिल जाएगा. कितना मजेदार है, कितना चालाक है. ठीक है, तो अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे, बट दे वर ऑलवेज कीपिंग इन माइंड देयर इंटरेस्ट और द प्रॉफिट. क्या ऐसा लग रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स केवल और केवल क्या सोच रहा है कि हाउ कंपनीज प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड, बट द प्रॉब्लम इज हु विल बी डिटरमाइंड बाय द डोमेस्टिक एजेंसी. कौन कलेक्ट करेगा? तो द वन हु विल ऑफर हाईएस्ट बिडिंग अमाउंट. ये क्या दिखलाता है? दिस इज द ग्रीड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है जो आपको एक बार में सबसे ज्यादा अमाउंट पे कर सकता है फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. सो दिस इज द पॉइंट हियर. ओके, नाउ दिस सेटलमेंट, 5-year सेटलमेंट, इज ऑल्सो नोन एज क्विनक्विनियल सेटलमेंट. मत ये डिफिकल्ट वर्ड हटा दो, ठीक है, ये चतुर्रामलिंगम का वर्ड है. सीधे क्या लिखो? 5-year सेटलमेंट. ठीक है, डोंट गो टुवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड्स लैंग्वेजेस, जरूरत ही नहीं है. हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड 5-year सेटलमेंट. जहां भी डिफिकल्ट वर्ड हो सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, अपने हिसाब से. ठीक है, टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ लैंड रेवेन्यू. मतलब इनका एक्सपेरिमेंटल स्टेज था, वैक्सीन टेस्ट कर रहे थे कि कौन से मॉडल से कौन सा ज्यादा मतलब रेवेन्यू आ सकता है. दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल मॉडल. सो ही वाज लर्निंग आल्सो, ही वाज आल्सो गेनिंग एक्सपीरियंस. In this policy, the Zamindari system of Bengal was changed, and 5 year of rent was levied on the leaseholders who promised to pay the maximum rent through auction. बता ही चुका हूँ, who will promise to pay maximum rent through auction. अब देखो मेन गोल क्या है? मेन गोल was to increase the land rate and collect land revenue on time. ज़्यादा पैसा मिले और टाइम पे मिले, to increase the land revenue and to get more land revenue on time. This is what कंपनी यही कर सकती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कंपनी. द कंपनी विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यूज. कंपनी यही कर सकती है. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 5-year सेटलमेंट, इट वॉज सीन दैट द रिच पीपल गॉट लीजेज. लीज में ऑक्शनिंग कौन कर पाएगा? द रिच पीपल गॉट द लीजेज बाय कॉलिंग मोर ऑक्शंस देन द ट्रेडिशनल
zamindars, and now zamindars became pensioner. उस एरिया की जमींदारी कोई बड़ा बिजनेसमैन ले लेगा और कुछ पेंशन किसको दे देगा? जमींदार को. जमींदार had become pensioners. Okay, now the zamindars call for extravagant auctions to get a 5-year lease. Inhumane treatment was inflicted on the rayats. Rayats means peasants. To collect rent, so many rayats fled their homes. It means in collection of land revenue, why what you are doing? You are using forceful and coercive means in the collection of land revenue. ठीक है ना? You are using what? Forceful and coercive means. Now, looking at this entire structure, tell me what is the basic purpose. And one more thing, that when this 5-year settlement ended in the year 1777, what Warren Hastings did, okay, so he made it what? Yearly. After this was made what? Yearly settlement. Annually कर दिया गया, yearly कर दिया गया, right? And here also the peasants were oppressed. 5-year settlement may be, okay, who was oppressed? The peasants were oppressed. 1-year settlement may be, who were oppressed? The peasants were oppressed. Got it? So this is the idea. समझ में आया? वॉरेन हेस्टिंग्स, इजारा, पंचशाला, 1-year settlement. अब रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है. Only you will highlight important years in your notes with the highlighter और एक बार quick revision बस. Okay. Now we are coming to the second topic, that is permanent system of settlement. Permanent system of settlement. Permanent system of settlement.